बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं मुझे, अब बहुत ज़्यादा तंग। वो ये है कि बार बार एक चीज़ आई कीप ऑन टेलिंग अगेन एंड अगेन, एंड येट आई फाइंड दैट देयर इज लिटिल और नो प्रोग्रेस एट ऑल। उसको मैं बाद में लिखूंगा। ऑन दिस लेट मी टेल यू, वी हैव टू work on our academics. We have to work on them day in, day out. We have to work 24/7 on them. 24/7, when I say that, includes your time at home also. And what we are doing currently is not in consonance with the demands of the current education trends. It is understood that the school is passing through financial crunch. We can't have all the things goody-goody. We can't have the very state-of-the-art infrastructure and all that. But whatever is available to us, the art of teaching is independent of your infrastructure. I can understand that the smart classes in each and every room may add to your classroom teaching, but having said that, let me tell you, without it also, with it, without it, in spite of it, you can still do wonders with your academics. If only you follow the lesson plan in the classroom. Now I am going to the classes. Each day I go to one class, and there are common observations. And maybe you are not aware of on which point I am evaluating you. So I am here today to discuss in length what I require of you. What as a teacher you are required to carry on in the classroom. Although it should be understood by one and all, you people are attending more CBTs than me. Each year you have been attending for the last 20 to 30 years, depending upon your tenure in the office service. But still, sometimes it looks as if you know nothing. And sometimes I have this feeling that you know everything and you are not doing it deliberately. The common observations I will keep on dwelling upon as I will come to this. This PPT is prepared by me in the morning itself. Observing you on 20 points. There are 20 parameters in which I am observing the teacher's classroom teaching. I am going points to be kept in mind while teaching a class in a regular period. Before I go to that, let me tell you one of the blunders that I came across. When I walk into the classroom for observing you are to teach. Don't give me any excuses. That sir, I have already taken 2 periods, now I am relaxing. I have given work to the student, now I am not doing anything. For God's sake, if you are doing it, you are getting 0 marks in my assessment of yours. When the principal of the school is walking in your class, it's an honor for you. That he has come to learn from you, and you are denying him this opportunity by simply saying that, sir, I have already taught them. In one period I take them to the ground, in another period I take them to the science exhibition, and now I am done. Please, for God's sake, any sort of response like this would only invite ridicule from my side. Now the first point is, was the lesson plan available in the class? Lesson plans have been, last session when we met, I talked about lesson plan in detail.
people willingly or unwillingly are submitting your lesson plans. But it is not to be submitted for the sake of submitting only. It is to be carried in the classroom. 90% of the teachers were found without lesson plan and they are teaching. You are to consider every period, every day as the one in which principal might appear from nowhere. You might think that the principal was busy in office, there were some people with him, he was having a good time, today he will not come. I may appear from nowhere. If you don't think that way, you are bound to make this mistake. There will be time when you will be found without lesson plan. Finding a teacher in the class without lesson plan means he is not teaching as per the lesson plan. First thing. Second thing, he may not have submitted his lesson plan. All your details, whether you are submitting your lesson plan regularly or not, is going in record. Nothing will come on a platter for you. That 10 years we have passed, let's now go for the progression. It is now performance-based progression. You perform, you progress. You don't perform, stay wherever you are. And that is the best way we can think of doing for the teachers. So, lesson plan not carried to the, this is my observation, this is not carried to the classroom if available. There were instances when teacher, I was very happy for one or two teachers who walked up to me and told me, sir, this is my lesson plan for this. I went through their lesson plan. I saw their teaching. Whether it was in consonance with the lesson plan or not, that is a separate issue. But they have the lesson plan. So when lesson plan is available in the classroom, I will award marks for that to the teacher. Next, इसमें इतनी सी बात. दूसरा पॉइंट हमारा है ड्रेस, नीटनेस एंड अपीयरेंस. ये पॉइंट पे हम आपको असेस करते हैं और आपको याद होगा ये पॉइंट हमने आपको बताया था. आपकी ड्रेस कैसी होनी है. उसके बारे में ये है, you should be comfortable. पहली बात. But comfortable should not be at the cost of lowering your dignity in the eyes of the students. समर सीजन चिकन सूट पहनिए, लेकिन it should be presented. It should not be revealing for the ladies, and it is true for gents also. Tight, skin tight clothes, outfits should not be worn. The point when you that. Teachers are the role models, and students copy their favorite teachers and wanna be like them. आपको नहीं पता कितने टीचर्स, कितने बच्चे, आपकी बच्चियां टीचर्स की तरफ, उनकी फेवरेट टीचर हो जाती हैं, उनकी तरफ देखते हैं कि आई वांट टू वियर दिस इयररिंग्स व्हेन आई ग्रो अप लाइक माय टीचर. आई वांट टू कैरी विद मी पर्स लाइक दिस विद माय टीचर कैरीज. एंड इफ योर पर्स इज हैविंग wrinkles, torn apart, one of the zip is open, some papers coming out of it, the teacher, the student will, the first impression of the mind of the student is negative about it. And don't think that we are regular customer to the students. Each day is a new beginning. Each day. So please, any fault in your dress code might get carried in someone's life unintentionally. मेरे टीचर सारे गुस्से वाले थे. Unintentionally, मेरे रोल मॉडल सारे गुस्से वाले थे. And unintentionally, I carried that anger with me throughout my life. Because they were all, most of them were, they got education when either India was taking independence or India was in the British era. That's how the things used to went at the time. Unintentionally, I got so many things from my teachers. My administration acumen, whatever little I have knowledge about administration, the way I teach, used to teach the student, even I teach today also. They all have a reflection of my teacher. So teacher is the reflection, and student, try to imbibe their qualities and especially their dress. Hairs not combed properly. कटवा लो बाल.
I am thinking of becoming bald because my hairs are the worst quality that the God has given. Very curly, unnecessarily going everywhere from everywhere to everywhere in all directions. So why I am saying hair should be combed properly. If you are not looking yourself in the mirror before you walk in the class, you might be becoming the ridicule of the day. Students will not tell you, but they will just laugh, giggle. How madam is coming. Look at the sir. Sir has worn high neck t-shirt below the shirt in such a scorching sun seat. They will be ridiculing you, and then whatever is to come in the next 30 or 40 minutes will all be lost. तो ड्रेस सेंस आपकी अच्छी होनी चाहिए, एलिगेंस एंड ग्रेस। अब इसका मतलब ये भी नहीं है मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप बहुत अच्छे जज हो, आपको मेरे से ज़्यादा ड्रेस सेंस की नॉलेज है, मुझे तो इतनी है भी नहीं। मैं तो बाजार में जाता हूँ तो मैं शर्ट और पैंट का कपड़ा लेना तो मुझे सभी अच्छे लगते हैं, मैं कोई भी दे देता हूँ एंड फटाफट आई जस्ट डू इट एंड हर्डली कम बैक। Whereas ladies have this, उनको एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है, they have very good dress sense. But at the same time उसको हमने फैशन शो नहीं बनाना, but presentable, comfortable, not at the cost of lowering your own dignity in the eyes of the student. Then look yourself. Very important thing is, I was planning of installing a mirror in the staff room, but there are so many staff rooms here because everybody wants to sit alone. Daughter doesn't want to sit with the Bharti doesn't want to sit with the benches, Sanjay doesn't want to sit with Margaret doesn't want to sit with Sanjita, and everybody has his own stuff. So I cannot install all the mirrors in all the rooms, but still there are mirrors in the washroom. At least you have your own look mirror, take it out, see yourself, at least see your face. Yes, it's a very important point I am telling you. You become what your teachers look like. Anyway, let's go to the next one. This is the third point on which you are being assessed in the classroom. Speaks clearly and comprehensively, engaging discussion with students. अब मैं साथ साथ आपको ये भी बता रहा हूँ what I have observed that most of the teachers are very good at speaking. You are mixing both the languages. When it comes to mathematics, science, fair enough. But when it comes to English language, I expect the teachers to be presenting their lecture in English. And they are doing it. But if at one point or 2 point you feel like you have to explain them in Hindi, okay, go, no problem. But a teacher of Hindi is expected to use Hindi words only in the class, and that too with correct pronunciation. When we speak in daily language, we speak even Hindi with lot of mistakes. जैसे मातृत्व है, मातृत्व बोल देते हैं, पंजाबी लोग बहुत मिस्टेक करते हैं, मेरे भी वो इनहेरेंट मैकेनिज्म में है, मैं भी कुछ हिंदी बोलते हुए कर जाता हूँ, लेकिन हिंदी टीचर से एक्सपेक्ट नहीं करते। इसी तरह से इंग्लिश टीचर से वी डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम इंग्लिश टीचर दैट हिज प्रोनाउंसिएशन इज डिमांडिंग इज ऑन द लोअर साइड। सो engaging discussion, now this is the main point. I found that about 40% teachers are making it a monologue, one-way communication, go, stand and deliver. अभी उसके ऊपर भी आएंगे, क्लासरूम मैनेजमेंट पे भी आएंगे। ये पॉइंट पे हम आपको जज कर रहे हैं, आर यू एंगेजिंग स्टूडेंट्स? जैसे मैं आपसे खड़ा हुआ कर रहा हूँ, अभी आपको मेरी बात मोनोलॉग लग गया, जैसे आप बोले जा रहे हैं, मैं आने वाला हूँ, मैं सवाल पूछूंगा आपसे, तो वो फिर नहीं लगती, मैं घूम रहा हूँ बीच में, आई एम कमिंग टुवर्ड्स यू, आई एम आस्किंग यू, देन आई एम एंगेजिंग यू। एंगेज बच्चों को करना एक वाइडर टर्म है। व्हाट्स योर बॉडी लैंग्वेज?
How are you looking at the students? Are you staring at the students? Or you are giving them this confidence? Yes, you are interested in them. Yes, you want to teach them. Yes, they are important to you. These all comes under the bigger umbrella of engaging discussions in the class. Now, discussions are not taking place in the classroom in our school, or little or no discussions are taking place. The prime reason of it, I will come to it later, that the students encouragement of the students for asking the question is not taking place. हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना प्रिंसिपल के साथ, पहले तो नहीं अटेंड करी वो मीटिंग, आंखें बड़ी करते हैं, आंख में कुछ पड़ गया है, पेन होता है, पानी के छिपे लगा। So please engage the student. That is very, very important. It is being checked on a scale of 10. How far you have been fruitfully able to engage the students will determine your marks in that. Each of these 20 minds carry 10 marks each. आप बिलो एवरेज है तो 0 से 2 नंबर के बीच में लगेंगे। आप थोड़े से पर ठीक है, ओके है, तो 2 से 4 के बीच में लगते हैं, फिर 4 से 6 के बीच में, फिर 7 से 10 के बीच में, ऐसे बनाया हुआ मैंने, ठीक है। अब एंगेजिंग डिस्कशंस मुझे चाहिए आपसे। uses words and expressions within the student level of understanding. क्या ऐसा तो नहीं है आप हाई साउंडिंग वर्ड्स यूज कर रहे हो? जो मैंने देखा है ज़्यादातर तो ऐसा नहीं है। 90% of the teachers are using the words and expressions within the level of understanding. लेकिन मैं यहाँ बात करता हूँ जो साइंस के हमारे टीचर्स हैं, जिन्होंने MSc लेवल तक केमिस्ट्री पढ़ी है, MSc लेवल तक बायोलॉजी पढ़ी है, MSc लेवल तक फिजिक्स पढ़ी है, तो जब वो छोटी क्लास को पढ़ाते हैं तो वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको तो फिजिक्स का सब कुछ आ गया, अब आप 7th क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो 7th क्लास के ग्रेड का लेवल क्या है, क्या वो उस टर्म को समझ पाएगा? So please don't use those terms. Use the terms up to their level or a grade below their level, or the topics which have been covered, only use those kind of technical terms. इसमें सिर्फ words ही नहीं है, technical words should not be heavy but simple daily uses. Words should not be big dictionary type of words. इस वर्ड के लिए तो डिक्शनरी लेनी ही पड़ेगी उसके बगैर। जैसे शशि थरूर है, if somebody talks to him, he will have to refer to the dictionary. So that's a waste of the time. You try to impress upon the person, but you ended up using on communication. So that's not advisable. Similarly, this is true for teaching also. While teaching maths and science, use technical words only till the level of student or the class you are teaching. Yes, I have already. This is not happening, but sometimes inadvertently this may be. For example, in mathematics, I go to a student of 12th class, I am teaching 12th class student, and I start talking about topology. I start talking about hydrodynamics terms. They won't be able to understand. मैं 10th क्लास में अभी मेरे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी पढ़ाने लग जाऊँ। प्रदीप जी जागते रहे, आपसे पूछ लूँगा मैं रिवाइज रिपीट करने के लिए, ठीक है? आपको शुगर तो नहीं है? जो दवाई खाई थी आज खाई है ना? बढ़ती तो नहीं खाना खाने के बाद? फिफ्थ पॉइंट जिसमें असेस करते हैं, whether the teacher is showing dynamism, enthusiastic है अपने टीचर लेक्चर को लेके, वो उसकी आंखों से पता चल जाता है। इसका कोई रूल नहीं है कि मैं आपको ऐसे करना है तो आप enthusiastic ज़्यादा लगोगे, कोई भंगड़ा डालना है।
लेकिन आपका अपने टॉपिक के प्रति कितना प्यार है लग जाता है। आप कितने शिद्दत से पढ़ा रहे हैं, आपकी आवाज़ बाहर तक आ जाती है, आपकी खुशबू आ जाती है क्लासरूम की। खुशबू कैसे आती है? पेरेंट्स खुद ही आके बताने लगता है मैडम बहुत अच्छा पढ़ा। और खुशबू कैसे आती है? हम किसी और काम से जा रहे हैं, आपकी क्लास के बाहर से निकले, हमारी एक ऐसी नज़र गई और हमने देखा कि टीचर कैसे एंगेज कर रखा है बच्चों को। तो आपका कॉन्फिडेंस, लेक्चर आप पढ़ाने चले गए, इंटीग्रेशन पढ़ाने चले गए, इंटीग्रेशन थ्रू पार्शियल फ्रैक्शन, आपने खुद ही रात को तैयार नहीं करा, रात को लाइट नहीं थी, आप तैयार नहीं कर पाए, सवेरे आप अंदर से आपका फियर फैक्टर हावी हो गया आपके ऊपर। अभी एक और पॉइंट आएगा जिसमें मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो आप यू विल बी लो ऑफ कॉन्फिडेंस एंड प्लीज डोंट थिंक ये तो हमारे बाएं हाथ का खेला है, ये तो ऐसे करा देंगे। इज एंड आर मैडम कल करवा रहे थे प्रोनाउंस, है ना, संजू मैडम की क्लास कल मैंने ली और इनके लिए एक बार पूरा ताली तो बनती है। Why I have asked you to clap? She is the maximum marks student or teacher here. अभी तक जितने भी टीचर को मैंने असेस किया उन्होंने सबसे ज़्यादा नंबर किया है। क्यों आए हैं? Because she is, जितने भी पॉइंट इसमें आते हैं उन सभी पॉइंट्स पे बारिंग 3 or 4 पॉइंट्स she was doing excellent. The first point was basic. She was not having lesson plan. She said, sir, daily I carried, but today my as luck would have it, my bad luck, I didn't go. तो ये इसलिए मैंने कहा ना, अगर रोज आप होंगे तैयार तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास रोज दिन है, जिस दिन मेरा किसी के साथ हो गया, बदमाशों के साथ सामना, उसी दिन नहीं है। सिद्धू मूसे वाला रोज बुलेट प्रूफ गाड़ी में जाता था, बट एक दिन उसका था, लेकिन आपको रोज ही रखनी पड़ेगी, आपको भी। सो इसलिए मैंने कहा कि इन्होंने जो पढ़ाया और जो बच्चों को जैसे इन्होंने एंगेज करके रखा वो देखते ही बनता था। आई विश आई हैड कैमरा, आई वुड हैव रिकॉर्डेड। एक्सीलेंट जॉब। आपने प्रोनाउंस बहुत अच्छे से पढ़ाया, आपने एग्जाम्पल, शी वॉज गिविंग एग्जाम्पल्स। देखो एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी है, उसके ऊपर भी एक पॉइंट आएगा, वो भी हमने रखा है। हाउ मेनी एग्जाम्पल्स यू आर गिविंग टू द स्टूडेंट फ्रॉम द डेली लाइफ। संजू मैडम से मेरी रिश्तेदारी नहीं, आप नहीं सोचो सर जलंधर के, मैडम अमृतसर के हैं, ये रिश्तेदार होंगे, इनकी प्रेस करो, किसी की भी नहीं है मेरे से रिश्तेदार। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से खैर, हम सबके के साथ हैं। जो अच्छा करेगा उसकी प्रेज मैं ये भी हेड ऑफिस में भी करूँगा, कहीं पे भी करूँगा, लेकिन जो नहीं अच्छा करेगा उसको उल्टा भी है मेरे पास। दैट इज हाउ माई टीचर्स वर्क एंड दैट इज हाउ आई हैव अनइंटेंशनली कैरिड देम इन माई पर्सनैलिटी। ये मैंने बता दिया आपको कि टीचर्स का बहुत ज़्यादा असर होता है बच्चों पे। एंड enthusiastic टीचर often spices the class with excitement, enjoyment. वो जो है ना, वो कि चलो बच्चों आज करते हैं हम ये क्या कोई भी टॉपिक पे, आपने देखा है कभी ऐसा? क्या होता है? इन्फ्लेशन पढ़ाना है, एक कहानी बताते हैं इन्फ्लेशन के लिए। ये दो दोस्त थे, तो एक दोनों को प्रॉपर्टी, दोस्त क्या भाई थे, सेपरेट हो गए, प्रॉपर्टी डिवाइड होगी, दोनों को 50-50 लाख मिले। एक भाई तो शेयर मार्केट में लगाता रहा। एक आदमी भाई ने शराब पीनी शुरू कर दी, वो शराब ही पीता था, और शराब इतनी पीता था उसको ये भी रहती थी कि बोतल में उठा दो, तो उसका पूरा घर ही शराब की बोतलों से भर गया। ग्राउंड छत पे शराब की बोतलें, 50 लाख जब खत्म हो गए 50 साल बाद, तो शेयर मार्केट क्रैश कर गई और जो शराब की बोतलों का रेट बढ़ गया, खाली का 5-5 रुपये के हिसाब से 50 लाख बोतलें, 2.5 करोड़ रुपये बना के बैठ गए। इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ इन्फ्लेशन। प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड किस चीज़ की मार्केट में कैसे आ रही है, सप्लाई कैसी हो रही है। सो एग्जाम्पल्स शुड बी देयर, enthusiasm should be there. डायनेमिक टीचर, एक डायनेमिक टीचिंग एक ऐसे टर्म है, डायनेमिक टीचिंग के ऊपर पूरा मेरा एक सेशन लग सकता है, लेकिन इसमें कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है, प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, चेंजिंग एक्टिविटी है। एक्टिविटीज स्मॉल एक्टिविटीज यू कैन टेक इन द क्लास। बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं है कि एक्टिविटी में तो पूरा 30 मिनट चला जाएगा, छोटी एक्टिविटीज होती हैं। बच्चे से क्रॉस क्वेश्चन कर लीजिए, उसको ले जाइए, उसको ही विल बी गोइंग बैक टू हिज होम
drawing inferences with the classroom topic and the things that he observed in his nearby surroundings. That is also an activity. At all times you should be having happiness, glee, आंखों में चमक आपके हमेशा क्लासरूम में होनी चाहिए, ना कि बिल्कुल ऐसे लगे आज मेरे पढ़ाना पड़ेगा, आज मेरे पढ़ाना रोज का काम हो गया। तो प्लीज इस चीज को लेके ये पॉइंट के नंबर है कभी 0 से 10 तक में कितना टीचर एंथुसियास्टिक था, कितना डाइविंग था क्लासरूम में, कितना वो डायरेक्ट टीचिंग कर रहा था, कितना कॉन्फिडेंस था उसमें, इसका एक हमने पॉइंट रखा हुआ है। क्योंकि मेरे को लगा कि ये पॉइंट मैं बता दूं आपसे, डिस्कस कर लूं मेरी डिमांड्स क्या है आपसे, ताकि ऐसा ना हो कि सर मेरे नंबर कम इसलिए आए कि मेरे को पता ही नहीं था कि मुझे किन पॉइंट्स पे चेक करा जा रहा है। तो आई एम चेकिंग यू, असेसिंग यू ऑन दिस पॉइंट्स। Avoid distracting mannerism and gestures, engaging eye contact. Now this is why I told you जब हम engagement कर रहे थे स्टूडेंट की engage की बात करते हैं, engaging अपने स्टूडेंट्स की। Here are some tips for maintaining effective eye contact in the classroom. ये मैं पहले भी कभी मैंने बताया होगा। Scan the entire classroom. हमारी सबसे बड़ी कमी क्या रहती है, हमारे फेवरेट्स हो जाते हैं क्लासरूम कि ये मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, रजनी मैडम, उधर से संगीता मैडम, उधर से रीलू मैडम, बस बाकी बच्चे का है नहीं आया जाता। पंजाबी में आपको बता रहा हूँ कैसे होता है, बच्चे कहते हैं ये तो टीचर हमारे में, वी आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द टीचर, व्हाई टू पे अटेंशन टू, करते ही नहीं हम, चलो नहीं करते काम कर लो, करते हैं। You should be scanning the entire class, not just specific student. This will help you create a sense of inclusion. मैंने क्लासरूम ऑब्जर्व करा तो मैंने देखा ज़्यादातर स्टूडेंट अपना लोकलाइज हो जाते हैं इस एरिया में। आप वॉक करके बच्चों में क्यों नहीं जा रहे? आप हर बच्चे से क्यों नहीं क्वेश्चन, हर बच्चे से मुमकिन नहीं है, लेकिन हर जोन में ये मान लो आप अपनी क्लासरूम को 4 जोन में डिवाइड कर दो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 बच्चों को मिलेंगे, बीच में जाओ तो देखो कॉपी पे क्या कर रहे हैं, कभी भी टीचर आ जाएगा। लेकिन हम क्या करें, हम स्टैटिक होके पढ़ा रहे हैं। होल्ड आई कॉन्टैक्ट। अब आई कॉन्टैक्ट कैसा होना चाहिए, इट शुड नॉट बी थ्रेटनिंग। आई कॉन्टैक्ट जब आप बच्चे से करते हैं, डोंट मेंटेन आई कॉन्टैक्ट फॉर अ वेरी लॉन्गर टाइम। आई कॉन्टैक्ट से पता चल जाता है टीचर की इंटेंशन, वो बच्चे को पढ़ाना चाहता है या बस एक खाना रोटी करना चाहता है। 15-20 सेकंड के लिए बच्चे को यस बेटा प्लीज शो मी, टेल मी आंसर दिस क्वेश्चन। इन द मीन टाइम यू आल्सो हैव टू लुक एट द एंगेजिंग आई कॉन्टैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस विल हेल्प यू एस्टैब्लिश एफर्ट एंड ट्रस्ट विद द स्टूडेंट्स एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम फीलिंग अनकंफर्टेबल और थ्रेटन्ड। ज़्यादा देर तक नहीं आपने करना। यूज नेचुरल आई मूवमेंट, अवॉइड अपीयरिंग रोबोटिक और फोर्स। नेचुरल आई सब तरफ आपका ध्यान देना चाहिए। जैसे प्रताप सर की तरफ मेरा ध्यान अगर नहीं जाएगा तो वो इसको नहीं भी सुनता। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो कॉर्नर में बैठे, जैसे मैं इधर उधर देख के आपको देख लिया, आपको थोड़ा सा देख लिया, पीछे में देख ही दिया, तो ये मैं फील किया मैं तो अनवांटेड हूँ, मेरे को तो प्रिंसिपल को इंटरेस्ट नहीं दे रहे, तो मैं ही फिर फॉलो करूँ। ये सेम बच्चे भी होता है, मतलब कहता है टीचर को हमारे से क्या पर पड़ता है या नहीं है, तो उसकी क्या होता है, ही बिकम he gets distracted from his routine studies. रोबोटिक नहीं बनना, हम ज़्यादातर रोबोटिक बन जाते हैं। हम ऐसा लगता है कि हमारे को कोई जबरदस्ती कर रहा है कि ऐसे पढ़ा, अंदर से भी करना चाहिए। This will help you convey authenticity, sincerity, and prevent students from feeling manipulated or deceived. मैनिपुलेटिव भी ना लगे कि पता चला कि बस एक तरफ ही आपने कर लिया, उससे आपकी जैसे आपने क्वेश्चन पूछा उसमें जवाब दे देना है, और उधर वाले स्टूडेंट ने भी जो आपने चूज करा उसने भी दे देना है, बाकी से कुछ हो नहीं रहा, तो ये मैनिपुलेटिव हो जाएगा कि टीचर इज सेटिंग द क्लासरूम सेटिंग, ये इज ऑन मैनिपुलेटिव वे, इज ट्राइंग टू शो कि ये मेरे बच्चों को सबको आता है।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये 7 पॉइंट है जिसके ऊपर असेस आपको कर रहे हैं हम। Is the teaching in the classroom is in consonance with the National Education Policy 2020? National Education Policy बहुत ज़्यादा यूज होती है, मैं भी बहुत यूज करता हूँ। है क्या ये हम कर चुके हैं ब्रीफ में। इफ यू रिमेंबर 1 आवर का आपने यहाँ पे वीडियो देखा था, उस पर हमने सब बताया था। इट्स अबाउट होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। होलिस्टिक पूरा का पूरा उसको डेवलप करना है, कॉग्निटिव लेवल। ये सारा का सारा अगर आप देखेंगे NEP 2020 focuses on holistic development of the student by nurturing their cognitive, social, emotional and physical well-being, skills for the future, flexibility and choice। ये पूरा एक वाइडर टर्म है। मेरे को आपकी क्लास में अगर आप अपने बच्चों को एंगेज कर रहे हो, उनको कंस्ट्रक्टिविज्म से पढ़ा रहे हो, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने का, लेट देम कंस्ट्रक्ट नॉलेज ऑन देयर ओन। इफ यू आर infusing small activities in your regular day-to-day classroom teaching, you are giving them assignment, you are giving them small projects, you are discussing about the projects, classroom crackers, classroom quizzes, minor. I will feel that you are doing as per activity. That will be not asking for a more, that's not that I am asking you something big. तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। ये 7वां पॉइंट है जिसके ऊपर आपको हम असेस कर रहे हैं।